it wasn't me. बारिश में जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है वैसी वाली खुशबू आएगी आपको. You read about it and you're like, is this a meme or is this for real? There are so many. I Butter think chicken. रसमलाई. मुझे सेट की सारी खबरें कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से मिलती अरे थी. हाँ, costume department. Yeah. Hello, everybody. This is Manisha. Welcome to Social Nation. Today, we are with the cast of Mitti Ek Nayi Pehchan. We have Ishwak Singh, Shruti Sharma, and Nikhil Sachan with us today. I need to start with I saw the trailer, and I think it's really intense. But the one point that hit to me, to my heart, was what your character said, which is, I didn't get to say a final goodbye. Which I think hum sabke liye it's our worst fear. But also I think it's something that all of us kind of face क्योंकि जब हम सब छोड़ के आते हैं अपनी cities, you're from Lucknow, you're from Delhi, and that's kind of a sacrifice we make. So I want to know from each of you first, what is the one sacrifice you think you've made to fulfill your dreams? I think the biggest sacrifice is to sort of move away, move out of your comfort zone, leave your people behind and you start a new life in a different city. It's not easy. Every day is a battle, but it's worth it because I think something inside you is telling you to, pushing you in that direction, and telling you that this is something that you need to do. And there are more ways of just being connected to your family than sort of being physically there all the time. So I think in search of your pursuit of happiness, you have to leave home sometimes. For me, I think my family has sacrificed the most. The biggest sacrifice that me and my family has made is when we all parted. Like my father lives in a different city, I live in a different city, and my mom lives with me, and my brother, he keeps on hopping between. Sometimes my mom keeps on hopping between two cities. I think वो जो एक 4 लोगों का परिवार जो साथ में रहता है, उसकी जो एक खुशी होती है, वो मेरी फैमिली ने, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, आई थिंक वो बहुत हद तक सैक्रिफाइस किए चारों ने. तो अकेले मेरा हिस्सा नहीं है उसमें. तो आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम सब ने सैक्रिफाइस की है. घर छूटता है यार, मतलब, और वहाँ पे वापस आने के लिए मान लीजिए आप नौकरी वोकरी करने लगते हैं तो उसके लिए भी एक लीव एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ती है. जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, मुझे याद है मैंने जितने साल कॉर्पोरेट किया, होली या दिवाली जो आप अपने हक से ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, बट वहाँ पे भी अगर आपको 3 दिन की जगह 4 दिन की छुट्टी लेनी होती तो आप दिमाग में 5 बार रिहर्स करते हैं कि बॉस को क्या बोलूँगा कि यार अपने ही घर जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ जाने दो ना. तो छूट जाता है एक बार घर, तो that is the biggest sacrifice, I think. But also for a story like this, maybe we might not relate that much to being from cities. But again, for a farmers community, it's very close to their hearts. So for both of you, did you have any pressure while preparing for the role? And how different was it from your other character? Obviously, it is very different from all the characters that I have played till now, because performing the role of an officer, it is kind of a responsible thing because they have a particular stature, but you have to make them look human as well. Like that was my perception, that my character should not only look that she is an officer, so she will have a different attitude or something. I wanted to make her look as human as she can, like, because she has another life. Once she's in office, then she's a different person, but she comes back, she is a different person too. So I think switching between both the things, that was the most important thing I kept in my mind. But I won't say that it was a pressure, because it's a part of my job, and if I'm able to do it properly, that is like, if it portrays well on the screen as well, and if people are able to identify that switch, I think that will add a feather on my hat. So I won't say that I was pressurized about something. I was super excited that now Sir has given me an opportunity to bring a light on a different perspective of how officers also work hard. It's not for you. You don't want to get burdened by the responsibility of the magnitude of what you're doing. Because sometimes the character is, that there's say if you're playing a part of a biopic, and then it's, that person is out there and, he's respected and revered, and you got the opportunity to fill in those shoes, tell a story. If you start thinking about it, then it just becomes, it's counterproductive in the sense, because for you, the basic function of me as an actor is to tell that story honestly without getting bogged down by all these pressures. It's just like, a cricketer going and
sort of with the pressure of performing or hitting Yeah. a century or a double century or winning the World Cup. So it's not that. You got to leave that aside. Train your mind to do that. And of course, it's very, very different because it's playing a farmer. Got the lucky enough to do this, to slip into these shoes and to tell a poignant, a very relevant story, which is, so fresh that I think a lot of people will feel this is utopian. Though it's too good to be true, but it's happening. It's actually a change. It's a revolution. True. And so glad that Nikhil kind of made a show out of it. That more and more people will get aware of it. Right now, it's just accidentally something popping up on your feed, and you read about it, and you're like, "Is this a meme or is this for real?" So, true. yeah. I think actually my next question to Nikhil was going to be about the same thing. Why choose a topic like this? Because now we're also living in a space where everyone's running, say, behind comedy or something larger than life. So why choose something this simple and this rooted? मुझे लगता है आप कहानी को चूज़ नहीं करते, कहानी आपको चूज़ कर लेती है, फिर कहानी आपको पकड़ लेती है। वो विक्रम बेताल वाली जैसी कहानी होती है ना, वो बेताल बैठ जाता है आपके कंधे पे, आप भगा भी दोगे फिर आएगा, वो बैठ जाएगा। तो कहानियाँ ऐसी आपको पकड़ लेती हैं और फिर कई बार उसका थोड़ा लिख के मैं उसे छोड़ भी देता हूँ, बट द स्टोरीज विच कीप ऑन कमिंग बैक लाइक बेताल आर द वंस दैट स्टे विद यू। तो इस कहानी ने मुझे पकड़ लिया। वैसे ही वो कई आर्टिकल्स और इधर उधर न्यूज़ के फॉर्म में आई, कुछ दिमाग में जम बना, थोड़ा लिखा, फिर छोड़ दिया, बट कहानी फिर वापस आई एंड इट चोज मी, आई डिडंट चूज द स्टोरी। So it kept coming back to you. It kept coming back. Fair. Now I want to end with a quick game segment. This is called Mitti Pal Yaadein. So I will give you a few categories and you have to tell me who this applies to. The first one is who broke character the most. It wasn't me. इसने तो हाथ खड़ा कर लिया, मैं तो अच्छा था. Did anybody break character? Anybody. Or were you all very good at your job? I think when we were working, हाँ, एक तो था, एक मिनट मैं बताता हूँ कौन था. We had a very stubborn tractor track. जो 20 की स्पीड से ऊपर जाने को तैयार नहीं था, और एक और था ऐसे ही कुछ Okay. inanimate object. All right. Who had the best snacks in their vanity? अरे Snacks hands down. इन्होंने शेयर ही नहीं The- किया, तो मुझे मालूम क्या नहीं। यार? क्या आप कुछ the आपने foodie share of ही नहीं the किया? foodie of the group. My snacks you don't want to. It's all like आप vegetarian हो ना? हाँ। हाँ, बस फिर क्या से? Who was the foodie of the group? Me. You? अच्छा. Yeah. तो दिल्ली का खाना you got. And you didn't share. अरे लखनऊ अरे में we जाके were आप दिल्ली का shooting in मांगोगे? लखनऊ ये दिल्ली गुनाह नहीं कर ये सकते। तो these are like the food capitals यार. हाँ, When लखनऊ in आके Lucknow दिल्ली। it has to be Lucknow. That's When in Lucknow anyone who knows the lay of the land will be able to fill in the blanks. But हम यहाँ किसी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग नहीं करना चाहते, but everyone knows where to go when in Lucknow. But what's the one dish from each of your home cities that you miss the most in Mumbai? There are so many. I Butter think chicken. रसमलाई। Oh damn. लखनऊ के अलावा मैंने ऐसी रसमलाई और कहीं नहीं खाई, क्योंकि मुझे मीठे का ज़्यादा शौक नहीं है। पर रसमलाई एक ऐसी चीज़ है, और रबड़ी मुझे कहीं नहीं मिली मुंबई में। किसी को कुछ अच्छा पता हो तो मुझे बताएं। मैं आज भी रबड़ी तलाश रही हूँ बम्बई में। Butter chicken. हमारे कानपुर में समोसे खाने का बहुत रिवाज है, हाँ। और वो 48 डिग्री की गर्मी में गरम गरम खाए मैंने। दोपहर के 3 बजे। बट मुझे कोई जब उसे खाने का ना, कोई sense मुझे नहीं रबड़ी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और समोसे पे भी प्रॉब्लम नहीं है. वो भी मिल जाए तो भी आई एम इक्वली हैप्पी. I'm very hungry now. Okay. Now, do you all have an inside joke between the two of you? टू ऑफ अस Yeah. हम खुद ही जोक बन गए थे आज. इतनी धूप इतनी खुद ही जोक बन गए थे. शक्लें देख देख के पहचानी नहीं जा रही थी. You know the funny thing is that I was getting tanned for it, and by the mid shoot, right, Laksh, he comes to me with the makeup and he's like, done. I'm like, what do you mean done? He's like, you're tanned, you're already tanned. So I was हमारी स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हर शो में होता ही है, उन्होंने इनके हर एक सीन, हर एपिसोड के ना पिक्चर्स ले रखे थे कि अरे इसमें तो इतने सांवले हैं, इसमें इतने हैं, एंड शी विल ऑलवेज कम एवरी सिंगल टाइम. नहीं मैच नहीं हो रहा, थोड़ी और टैनिंग होनी चाहिए, थोड़ी और कम टैनिंग होनी Oh चाहिए. no, your makeup artist would have been really annoyed with you. I'm Mr. sure. Laksh.
Okay, the next one's go-to person for gossip. 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 फिर से हाथ खड़ा कर लिया. No मुझे सेट की सारी खबरें कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से मिलती थी. अरे हाँ, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट यार, क्या बात. क्योंकि जब भी मैं शूट पे नहीं आती थी कुछ दिन, उसके बाद जब मेरा शॉट लगता था तो मैं पूछती थी और क्या हुआ That सेट is पे. gossip department is /gossip/costume department. That's on every set. आपको किसी भी सेट पे जो भी अंदर की खबरें होती हैं या जो भी कुछ कुछ नहीं हुआ होगा है, तो भी बना देंगे वो. कॉस्ट्यूम आप डिपार्टमेंट से मिल जाता है. मतलब आप अप टू डेट रहते हैं. Very We love our costume department though. Because you need the खबरें. Thank you for making us keeping us informed. All right. And entertained. And My last question here is, without revealing much, can you tell me your favorite scene from the web series? सारे सभी फेवरेट है. ना. एक. I told you my favorite from the trailer. सब फेवरेट है. ट्रेलर में आपने देखा होगा कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ हाई पॉइंट्स हैं. I think those really hit close to home. Especially there's a scene where it's raining. And my character is in the getting his, like he's there trying to save his crop. So that was, I guess, I think in the one hell of an trailer experience. Yeah. there is also one scene where Kritika and Raghav, they are sitting and having a meal together. I think that is one scene which I really loved because You got boat पर आना? जहाँ पर जब कृतिका आती है घर पर खाना अच्छा खाने, वो वाला. हाँ वो हाँ. उसका ग्लिम्स है ट्रेलर हाँ, में. हाँ. तो वो पहली बार है जब मैं कृतिका को परफॉर्म कर रही थी. मेरा दूसरा सीन था कृतिका के साथ और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं रिलेट कर पा रही थी कृतिका से, क्योंकि मैं भी वैसी ही बातें, मतलब बचपन मेरा भी वैसा बीता है. तो जब हम बात होती है तो जब वो कहती है ना कि टोल छपरा उसका सुकून घर है, तो वो चीज़ आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट सीन है. Yeah, So beautiful. मेरा फेवरेट सीन इनका वही बाढ़ वाला सीन है. एक्चुअली वो वन टेक शॉट था, क्योंकि हमने पौधे ऑलरेडी खड़ा कर लिया था और हमें फिर बहुत सारा पानी छोड़ना था. Okay, हाँ. बहुत मुश्किल सीन था उसमें. ने बहुत रोना, चिल्लाना, चीखना सब कुछ था. बट अगर वो एक टेक में नहीं आता तो हमने जो बाढ़ का पानी छोड़ा है, वो पौधे तो एक बार ख़त्म हो गए तो वो दोबारा शूट ही नहीं हो पाता. और पूरा खेत वो उस लोकेशन का आखिरी सीन था, बिकॉज उसके बाद द एंटायर खेत वॉज डिस्ट्रॉयड. तो इशफाक ने उसके कुछ रिहर्सल्स किए, अपनी पोजीशंस मार्क करी और फिर सब ने बहुत सांस रोकने के बाद बहुत सारा पानी छोड़ा. एंड इन वन टेक ही नेल्ड इट Wow, yeah. without any Thank rehearsal. God. The biggest challenge was, I guess, the water supply was only so much. बहुत Plus, Would of course, also वो एक gotten बार flood हो गया तो destroyed, फिर yeah. हाँ, then it's ruined. No, it was one hell of an experience. Hats off to again, shout out to our directors, Yeah. Gaganjeet Singh and Alok Dwivedi, and also our producers, the creators. इसके लिए भी शो बहुत अच्छा बना क्योंकि हमारे दो डायरेक्टर्स हैं हाँ. जिन्होंने डबल एनर्जी से. दोनों का विजन बहुत अच्छा है. आलोक सर ने इतनी गहराई से एक्चुअल में मिट्टी के बहुत करीब है वो, और मेरे किरदार के साथ तो उन्होंने मुझे बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं. तो उन्होंने मैंने कहा बहुत एक खांचा तैयार करके दे दिया था मुझे कि खेलो. Great. With that, we come to the end of our conversation with the cast. But last in 30 seconds, just tell our audience why should they watch Mitti and when is it coming? बहुत सारे reasons हैं, and please trust us when we say that watch Mitti on 10 July on Amazon MX Player. You will enjoy it. आपको शो बहुत मूविंग लगेगा, आपको पसंद आएगा, and it will make some space in your heart, stay with you for a long time. Very long time. It will be like बारिश में जो सौंधी खुशबू आती है, वैसी वाली खुशबू आएगी आपको. बहुत cool. Yes. Thank you so much. All the Thank best. you. Thank you. Thank you.